Picture uh, this let's this is potential well, okay, which have initial point that is 0. The length of this potential well is width of this potential well is finite, that is from 0 to L. You may take initial position as q naught, but I have taken as q0, and ending point and total width is L. And so but wall length of this well is infinite. Okay, we are considering the ideal case. So the length of the wall is finite. Okay, and so this is your potential well. Okay, so if so what will be the solution of this problem? You know, in quantum mechanics we use the Schrodinger wave equation. Okay, so as we know that the equation for this particle will be H, that will be applied on an Hamiltonian state, P square over 2 m naught plus VQ. This is also applying on the Hamiltonian state. This will be, so we will solve it for the there are three regions. Okay, this uh, first region is R1. Okay, and this is region 2, and this is region 3. Okay, as we know that for region 1 and 3, okay, for uh, q and q greater than L. Okay, so our equation will become like this: H will be Hamiltonian will be, that will be the P square over 2 m naught plus infinite. So this will be the your equation. Okay, but along this we know that our H Hamiltonian and this is eigenstate of Hamiltonian. So the eigenvalue of Hamiltonian will be energy. Okay, and if I consider that this is true, so then energy become infinite. So this implies that then E will become will become
infinite. Okay, so if E and it is possible only, so that is not possible. So energy, so for energy to be energy to be finite, to be finite, we have to take, we have to consider that our psi h is 0 for q less than 0 or equal than 0, and q greater than L. So if we consider that, then so it will be a 0 for region. You may also say that for region 1 and region 3. Okay, so this will be the US solution for sorry, this was so the no particle will be exist, so it mean, so from the from the potential well, probability, what will become a probability of psi h, what is that? We know that I have already explained, that will be a psi h is psi h dot product. This is probability, and this when psi h is 0, so this become 0 multiplied by dot product of 0 with 0 is, it will be a 0. So probability of finding the particle, quantum particle in region 1 and region 3, that will become a 0. Okay, okay. सर So जीरो बता दें दोबारा. 0, thus finding the particle at region 1 and 3 will be a 0, because the when something is fall into the wall, into the well, they will be not come back again in the back in region 1 or 3, because it that person will not have इन्फिनिटी एनर्जी. ओके, इन्फिनाइट एनर्जी तो कोई नहीं रख सकता ना, उसको पार्टिकल से वॉल से बाहर आने के लिए इन्फिनिटी एनर्जी चाहिए. सो आउटसाइड द वेल, the existence probability of finding the particle will be a 0. Okay, this is all about the region 1 and outside the well. What will be happen inside the well? Now the term is what will be happen in. So so, so now we have to find
Yes, now this. Okay, so now we have to find what will be the probability to find the particle inside the well. Okay, inside the well mean inside well is the area defined where Q. Okay, Q will be F. Okay, so now we have to find the what will be, and this region will be defined as region 2 or region 2. What will be happen? Okay, at region 2, what is the potential? At region 2, you may see that the potential is VQ is 0. At region 2, Q is potential is 0. From figure you can figure. In this region, in region 2, the potential will be 0. Okay, at outside this region, region 2, the outside the well, the potential is infinity. Inside the well, the potential is 0. Okay, uh, okay, so एक्सक्यूज मी सर yes. सर इनसाइड में पोटेंशियल जीरो कैसे हो सकता है? क्या मतलब? वेल डिफाइन किया है ना कि आपने कोई उसको किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन नहीं है, पार्टिकल इज मूविंग इन फ्रीली इनसाइड, उसको कोई रिटार्डेशन नहीं है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है सर। हमने डिफाइन ही ऐसे किया ना, वी क्यू जो है वो आपके पास इनसाइड क्या है, 0। आउटसाइड जो है वी क्यू क्या है आपके पास, इस रीजन में भी इंफिनिटी है और इस रीजन में भी आपके पास वी क्यू क्या है, इंफिनिटी। ओके, इन रीजन 2 में दिस इज अ 0। ओके, so now equation 1 will become now equation 1 will become partial h cut over 2m minus h cut square. Okay, potential is 0. Okay, okay, सर नॉन रियलिस्टिकली वो हमें नोट लगा लें। okay, now it's okay. Okay, this is Schrodinger wave equation. Okay, so class only. So this will be equal to this is okay. Sorry, this is the Schrodinger wave equation for region 2, and for this q value is changing from 0 to L, and we know that I have already done it in the time dependent dependent Schrodinger wave equation. That will be 2 m naught e over h cut square, that will be 5h. Okay, as we have done in the time dependent Schrodinger wave equation. And if we consider that this this is c square, if I say, as I have done in the previous, you may also studied it in the solution of time dependent Schrodinger equation, that we will replace with the minus c, that is q cut and t cut,
anyway, that is psi h. Okay, psi, we consider that okay. If I consider that c is square, because to avoid the square root. Okay, so solution will become, or you may say that this is a k. Okay, uh, okay. So by we know that from d square equal to minus c square give the d is equal to plus minus iota c. Okay, and this the solution will become, this Hamiltonian state will become a exponential of uh, c q iota cq plus b exponential of minus iota cq. Okay. uh, okay, so this is the solution. If we expand it, then this become cos iota, oh sorry, cos cq plus iota sin cq plus b cos cq minus sin cq. Now uh, you may ask the question, how I write it. The reason is that we know that reason is that we must explain the reason. Okay, why we know that iota alpha cos alpha plus iota sin alpha. Okay, and exponential of minus iota alpha is always equal to cos minus alpha plus iota sin minus alpha. Cos is even function, that will become a cos alpha, jabki while the sine is odd function, so this become a this. That's why this is equal to, okay, we know about that. Okay, so that's why we have write it in this way. Okay, okay, so from above, a plus b cos cq plus iota a minus b from a minus from a plus b cos cq iota, if I take common iota. Okay, sorry, here is iota. Okay, okay, iota. Okay, from here, if I take a minus b, that because it when it multiply with this become a plus a, then b multiply with this will become a minus b. A minus b iota sine cq. May I write in this way? Okay, so this will be equal to this. As we know that a and b is a constant, we can say that that is another constant. As we know that a and b, these are constant, they may replace with the uh, not c, because I am using the c, so I may replace with the a prime. Okay,
another constant, and iota if I replace it with the b to differentiate that it is different than a plus b. Okay, when we add constant with constant, the result will be a new constant. A plus b will be replaced with the new constant, that is a prime, and this a plus b is a constant, and this a minus b multiplied by iota. Iota is also constant. You know that iota is constant. So iota a minus b is also a constant. So I replace this with another arbitrary constant, that is b prime. Okay. So may I write in this way? This is equal to a prime cos cq plus iota b prime sine cq. Okay. I may write. तो आपके पास ही आ गया. So may I write in this way? Okay, there must be a prime. Okay, so this will be the required result. Okay, now problem is that okay, सर iota साथ नहीं लगाना. iota a minus b, iota multiplying with the a minus b is completely is equal to b prime. Okay, so that's why iota नहीं आएगा. Okay, okay, got it. Complex number is also a number. Okay, iota is also a constant, a is also constant, b is constant, so iota a minus b is also a constant. Okay, so I may replace it with another constant. Okay, okay, जी सर. oh. Okay, what is this? This is psi h. Okay, now question is what is the value of a, b prime and c? These are the unknown constants. Okay, we have to find these values. Three things: a, b and c. Okay, yes. Okay, we have to find what is a prime, b prime and c. See, we have three constants. Okay, we have to find the value of these three constants. How we will find these values of these constants? We know that at region 1 and at region 2, oh sorry, at region 1, we know that at region 1 this red region, and at region 2 our red region are unaccessible. No particle will be found in this region, region 1 and 3. So it means when region 1 will be starting at q equal to 0, okay, at q0 the state will be a 0, and at ql the Hamiltonian will be a 0. Okay, so at psi h at region starting at 0, okay, at 0 and psi h at L, that will be a 0. That is the boundary condition. Okay, and these two regions
the your state will be particle will be a zero. See, okay. So at these region, if the zero, and if I say that this is equation X, okay. So firstly we consider, so far from zero, mean Q0, you will have equation X will become equation 1 will come 0 equal to A cos 0 Q0, okay, plus B sine 0, okay. Sine 0 is equal to 0, so this sine 0 is 0, so this term become a 0, sine 0 is 0, we know that, okay. But cos 0 is 1, okay. So you will have A prime, sorry, there will be a prime, okay. A prime become a 0. So from this you will get the A prime is equal to 0. So putting A is arbitrary constant. A is constant. Constant mean since A prime 0 constant, so it will remain 0 for entire space 2. A is constant now, so its value is not changing. So if its value is 0 at initial point Q0, then it will be 0 for entire space. Okay, got it? Okay. So since Az is 0, so it will remain 0 for entire space. Okay, because A is actually, why this is, because A is constant. That is the main. Okay. So by putting this value in equation A, so putting this in equation X. So equation X will become this is equation X. Okay, B prime sine CQ will be equal to so H not H. So psi H now become B prime sine CQ because A prime is 0. Okay, so you will get this result. Okay, now further question is that what is the value of B prime? We have gotten the value of A prime. Now what is the value of B prime and C? So firstly we will try to find the value of B prime.
B prime, to find the value of B prime, we know that for Q equal to L, psi HL is 0. Okay. 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 You got it? So if I put this value in this, sorry, here, then psi HL will be equal to B prime sine CL. Yes, I have written the Q is equal to L. This, but सर ये एक दफा बता दे दोबारा से. the psi H is 0 at 0, Q0 and QL. Okay. So if for Q equal to L, psi HL will be 0. So this will become a 0. Okay. Putting this value in this. Okay. Shaista, have you got why this is equal to this? जी सर. ठीक है. So but when you put this Q equal to L here, okay, then this become a BL and we have put Q is equal to L. So that's why. Okay. जी सर ठीक है. Okay, so from this, sorry, that will be B prime sine CL, but it is equal to, I have repeated this step one, you may remove it. Okay. 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 Class, please. One minute. Okay. सर नहीं तो दोबारा ही लिख लें. Please mute all. Okay. So chalo. Okay. So okay. I'll leave it. This is okay. Then this is 0, as we know that this is 0. If I put this is 0, then this is B prime sine CL. Okay. 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 If this equal to 0, okay, there are two possibilities. This implies that P prime may be 0 or sine CL equal to 0. Okay. If you consider that B is equal to 0, okay, if we consider B prime is 0, then psi H, which is B prime sine CL, because B prime is actually the fixed value. Okay, A is already 0, B prime is 0, then this psi H will become 0 for entire space.
this become a for entire space. Okay, if it is a 0 for entire space, then it means there is a no particle. Okay, in potential well there is a no particle. Okay, then it means if it is 0, it implies that there is no particle in well. Okay, but then we are doing nothing, mean no problem, because if the particle is don't exist, then what are we doing? Okay, so we will not consider this case. Okay, so we will consider that we will consider B prime is not equal to 0, but actually the sign CL is equal to 0. Okay, L is not L is length, mean the sign is varying. Okay, so this value is changing only the at the point L. Okay, so we may consider it. Aisha, please. Okay, so when sign CL 0 you made is 0. Okay, I think I should not repeat. So this implies that sign 0, this implies that CL will be equal to sine minus inverse 0. Okay, sine inverse 0. Okay, sine inverse 0 किस पे होता है? CL will be, yes, n pi. Okay, okay, and Yes, sir. this implies that L will be equal to n pi over, sorry, we are interested to find the value of, we know the L is the length of box, sorry, width of the box. So C is n pi L. So we will get the value of this constant. Actually, we are interested to find the value of this constant. Okay, and that is C. So you will get this result. Okay. Okay. Now phi h become this this psi h, this become so psi h become B prime sine n pi over L Q. Okay. Okay. Now we have to find what is the B prime. Okay. Now we have to find the value of what is the B prime. Now question is, now only have to find B prime. What is the B prime? We may find the value of B prime
we may find the value of E prime. How we will find? By normalization condition. What is that? As we know that, as we know that the probability of finding particle outside the box is zero. Yeah, outside the well is zero. We have already proved. Already proved. We have already proved that the probability of finding the particle outside the box is as we know that probability of finding the particle outside the valley is zero, already proved. Then it mean the probability inside probability to find the particle inside the well will be 100% because particle will be 100% inside the well. 100%. Okay. As we know that the probability of finding the particle outside the well is zero, already proved. Then it mean the probability of to find the particle inside the well is 100%. So total probability inside is equal to 1. Okay. So how the probability, so P H psi H will be equal to 1. Okay. So that must be equal to this. So and this is equal to this, so it means box length is 0 to L. Okay, box length is box is starting from 0 to L. Okay, so you got B. What is the get B sine this? Okay.
Let's select it. Okay. Copy, and paste. Okay. This is your p. Okay, so this is value. Okay, this is cat. Okay, so if I remove the so you will get this is cat, and what will be the bra, because due to integration the cat and bra notation. Okay, so here will be b sin n pi l. One is complex conjugate and one is okay. So this and integration, because it is changing with respect to q, l is constant, n is constant, pi is, so this will be equal to t. Okay, I have already explained it in the previous lectures, in postulate lectures. आवाज सही आ रही है बच्चों आपको? सच में शायद साउंड दूर चली जाती है। आवाज सही आ रही है? सर आवाज तो ठीक आ रही है, ठीक है, लेकिन सर जो आपने पहला बी साइन लिखा है ना, उसके ऊपर सर प्राइम आपने क्यों लगाया था? इसके ऊपर प्राइम क्यों लगा हुआ है? ठीक है, अब सर आपने लगा दिया, पहले नहीं लगा था, बस ये अच्छा, पूछना। अब यही अब ठीक है। जी सर। Okay, so b prime is maybe a complex number. B prime is maybe a complex number. Okay, and sine n pi q all remaining all are real. Okay, only the b prime may be a complex number. Okay, so what you will get from this result, this is equal to 0 to L b prime and b sine is sine square, because sine star is equal to sine, because sine is real number, there is no iota. Okay, n is real, pi is real, l is real, q is real, that's why that become a sine square n pi l over q dq. Okay, and this सर b complex conjugate with b, when we take b complex conjugate with b, क्या आ जाएगा आपके पास? मेरा ख्याल है मैं यहीं कर लूं। It is constant, and we know that b complex conjugate with b, when we multiply it, this will be a b square. Okay, so this there will be a square 0 to L integration. This is integration. Okay, not bracket, sine square n pi over L q dq. Okay, so how we may integrate it, I know you know better now about this. This will be converted into the 1 minus cos 2 is equal to, yes, who will tell? This will be equal to cos, yes, who will be answered? This will be equal to 1 minus cos 2n pi l q. May we write in this way? You will get, okay, cos 2n pi over l q dq. Okay, so
Okay. When we integrate it, this become L minus 0 is equal to L आ जाएगा ना, ठीक है. So आपके पास ये L आ गया. The first term will become this L, and the second integration of cos is, yes, integration of sine is minus cos, and cos is Sir, sine. Yes, साइन Sine. यस सर cos की इंटीग्रेशन माइनस साइन वर्ग cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और माइनस cos की cos की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है, उल्टा होता है. साइन की cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव प्लस cos होता है, ठीक है. बट जी इन सर इंटीग्रेशन इट इज रिवर्स. cos integration will be equal to plus sign, and sine integration will be minus cos. Yes, yes, जी सर okay. Am I right or wrong? सर आप राइट हैं सर. साइन का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस ही आएगा. अगर कॉस को दोबारा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो प्लस में आएगी साइन. So this will be equal to sine 2n pi l q. Yes, but when we take the derivative of this, okay, 2n pi, this will be divided with 2n pi l, okay, and derivative of q, the integration of derivative of q with respect to q is 1, so that's remain 0 to l. Yes, the value is changing from 0 to l. Okay, okay. So if we put this value, then sine 2n pi l will be, if I put the l and l, okay, this l will be cancelled with this l, okay, divided by l multiply the 2n. Okay, okay, this l will be cancelled out with this l. Okay, got it? This l is cancelled out with the l. Okay, you got it. Okay, have you got it? So sine 2 pi क्या होता है? Sine, but we know that but सर ये 2n पाई नहीं आएगा. 2 pi n 2n pi, yes, yes, 2n pi, that is equal to 0. So this total term become a 0. Okay, so you got it. Be careful. Okay, and that was equal to, according to normalized, because finding the particle is infinite. I mean 100%. The probability to find the particle inside the well is 100%. So that will be equal to 1. Okay, so this implies that B square is equal to 1 over L. Okay, got it? Or B is 1 over L square. When multiply
b multiply by 0 is 0. Okay, so सर मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया कि बी के ऊपर आपने प्राइम क्यों लगाया जिसका आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया हो। अच्छा ये प्राइम यार जहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हो। एक मिनट, प्राइम रिमूव क्यों किया है या प्राइम लगाया क्यों है, ये पूछना चाह रहे हो? ये सर प्राइम रिमूव तो किया है, रिमूव तो रिमूव मेरे से गलती से हो गया, ठीक है, दैट इज टाइपिंग मिस्टेक। ओके, एक्चुअली दैट इज ठीक है सर। ठीक तो है। फिर सर ये जो आपने फार्मूला लिखा है कि बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, इधर भी आप ये प्राइम लगा देंगे। हाँ यहाँ भी प्राइम लगेगा, ठीक है। ये एक्चुअली ठीक कांस्टेंट सर। है, ठीक है, एक्चुअली वो भूल जा, मतलब टाइपिंग मिस्टेक इसे कह लो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास बी इज कांस्टेंट है, ठीक है ना, बी प्राइम इज आल्सो अ कांस्टेंट, टाइपिंग मिस्टेक, आई एडमिट इट। ओके, you must write a b prime everywhere. Okay. Now what is the value of psi h? Psi h, that was the b prime sine, what was 2 pi 2n pi q over l, that is actually okay, by putting the value of b that become a oh, sorry, when we put the value of b prime is also constant, so its value will remain fixed for throughout this space, so that will become 1 over l sine 2 n pi q l. This is actually the state. Okay, so there was some there is a minor mistake actually, according to the this formula sine square alpha is equal to 1 minus cos 2 alpha divided, actually formula is that if there is a sine, okay, we know that the formula is sine square alpha is always equal to 1 minus cos 2 alpha divided by 2. Yes, mistake, the minor mistake, there must be it totally divided, must be divided with the 2. Okay, so that's must be divided with respect to 2. Okay, and similarly you may say that you may take the 1 by 2 as a common. Okay, and say so this will be equal to, okay, this will be equal to this. Okay, okay, so b prime will be equal to this. Okay, got it? So the result is this is the result. Okay, this is the eigenstate of Hamiltonian for particle bound in into the infinite dimensional uh, potential well. Okay, okay, okay. So this is the eigenstate. What will be the energy? Now the question is, what will be the energy? So if we okay, if we move here this from this relationship, c equal to cl equal to n pi. Okay, so from this relationship you have cl equal to n pi. Okay,
You may say that and from here c square is equal to 2 m naught e divided by h cut square. Yes, yes. And when we put that n square, c is equal to n square l square, that will become a or you may say that c is equal to n square l square divided by 2 m naught. Okay, c equal to n square l square 2 m naught m naught h cut square. That will be e. Okay, this will be e. Got it? Hello. सर अब ये सी स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एल स्केयर ये कहाँ से आया अब? Okay, I have already explained from here. CL equal to n pi square. Okay, ओके सर. CL equal to n pi. Okay, and तो फिर सर वो हमारे पास एन स्केयर बाई एल स्केयर नहीं आएगा? 1 minute. Yes, you are right. Yes, 1 minute. C. Okay, n pi square over n. Okay, yes, you are right. N pi. C square is n pi over L. Yes, n pi over L. You are right. C square is n square n pi L. C square will be n square pi square over L square. ठीक है? C square will be n square pi square over L square. This is the value of C. Okay, and 2 m naught E over H cut. Okay, from here this implies that E will be equal to n square pi square H cut square 2 m naught L square. This will be E. Okay, energy. Okay, this will be energy. This is the energy. Okay, and if you consider what is the if n is equal to 0,
for n equal to 0, if n 0 है, ठीक है, then E will be become a 0. Okay, because n 0, E will be 0. So E naught will be, the zero energy will be this. Okay, but if E will be 0, as we know from okay, I think I must select all. Okay, okay, okay. So this is for this is the formula. Okay, for n 0, if we put the n 0, then this sign will become, what will be value of this sign, that psi h will become psi h, this will be become because sine 0 is 0. Okay, as sine 0 is 0, so this will become a 0 for E0 equal to 0. Okay, so zero energy will be not exist for potential bus. No particle will be with zero energy. Okay, so this implies that so since state become uh, Hamiltonian eigen eigenstate eigen 0 for 0 energy, it means there will अस्सलाम वालेकुम be, सर। will be no part. यार सर वो जो सर ये जो इससे पहले स्क्रीन थी जिसके अंदर आप वो लिख के समझा रहे थे सर, वो दिखाइएगा एक दफा प्लीज। अच्छा, ये मैं अभी नोट कर रहा हूँ बेटा, कोई तरीका होता है, अभी मैं आपको ये करवा रहा हूँ ना, जो नोट करवा रहा हूँ ये तो नोट कर सर लूंगा, वो ठीक है, क्वेश्चन था उसमें, चलें ठीक है सर। मैं जब बताता हूँ, आप अभी मैं ये नोट कर लूँ फिर। नोट करना होता है इसलिए वो Since eigenstate become a 0 for 0 energy, it means there will be no अभी ये लिख रहा हूँ ना, अभी आपको ये बता रहा हूँ, ये तो लिख लो ना। Since Hamiltonian eigenstate become 0 for 0 energy, so it means there will be a no particle in within the potential well, within potential well for 0 energy.
or you may say that, or you, or zero energy is forbidden. Forbidden mean not exist. Forbidden for particle inside, for particle within potential box. Okay, got it? So E naught is not exist. Okay, so it means E naught will be not exist. Okay, or if we consider that for n equal to 1, okay, if we consider for and similarly for n equal to 1, when we put n equal to 1, then E square will become, E will be equal to, when put n equal to 1, the pi square h cut square over this will be E1. Okay, that will be the lowest energy state. Zero will be not a lowest energy state, but this will be the lowest energy state. Okay, I have put the n equal to 1 here. Okay, pi square h cut square 2m naught 2m naught L square will be the lowest energy state. Okay, so this will be the lowest energy state. Okay, so this will be the lowest energy state. This is lowest energy state of particle of particle within potential band. So this will be the lowest. Okay. Okay. So energy, this will be lowest energy with the psi, this value of with the psi h will be equal to 2 over square L sine n, sorry, n will be equal to 1. So this become sine pi over L Q. So this will be the lowest. You may say that this is the first eigenstate of Hamiltonian, and energy will be this. Okay, and got it? Okay. Why? If someone I have put this value here. Okay, and n equal to 1, 2 pi q over L. 2 pi q over L. 2 भी आएगा साथ में तो sin 2 pi q over n. Yes, 2 pi over. Yes, you are right. L. 2, yes, 2 pi over L sine q. Okay. Yes.
यस यस सर। सर जी, सर ये वैसे ही जो ई जीरो पे सर ये क्यों नहीं होता सर, इसके लोवेस्ट स्टेट? यार साइन में n जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो सर जाएगा वैसे और स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो देन इफ द स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, द पार्टिकल, देयर विल बी नो पार्टिकल, ओके, दैट्स व्हाई the lowest energy state will be not exist, okay. One thing, one minute, feeling that there is some I have put the value here, सर okay. इट इज़ पॉसिबल कि Hey, 1 minute, 1 minute. जी सर We have put it the value of h. 1 minute, please. Here, this is the value of psi h. We have only put the value of bh. Okay, so this was b prime sine n pi over lq. Okay, so if I consider that, if we put the value of b here, okay, this mean there is, this mean this is actually n pi q over l. Yes, yes, this is not 2 pi, this is n pi q over l. We have put it only the value of b prime, okay, that is equal to this. And because this is, so actually this is sine, we have put it the value of b prime here, okay, this is psi h, okay. So actually there is no 2, okay. Shaista got it? सर दोबारा बताना कहाँ पे मिस्टेक आई थी? This is the value of sine bh state, okay, Hamiltonian eigenvalue. We have put it only the value of b prime, okay, so we got it. So after putting this value, this become this, so it means this is sine n pi over L, okay. So this will be your result. This is the eigenstate of Hamiltonian, सर okay. साथ में फिर क्यों नहीं आएगा? Yes, the q will be multiplied, okay. This will be the, yes, okay, there will be no 2, okay. And if we draw the graph, okay, this will be the value of psi h, okay. Okay, similarly, एक्सक्यूज मी सर। hmm, सर इधर आपने कहा है कि n की वैल्यूज 1, तो इधर आप ले रहे हैं n पाई q ओवर l। हाँ, यस, n 1 हो जाएगा, ठीक है, यू आर राइट, n 1 हो जाएगा पाई ओवर l, ठीक है।
अब ठीक है, पाई ओवर एल डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है, Yes, sir. पाई डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई क्यू, ओके Okay, sir. okay, so this will be a psi 1. Similarly, what will be E2? Similarly, for n equal to 2, E2 will be equal to n n square E1. Remaining was a E1, okay, n square E2, that will be a 4 E1, okay. This will be equal to 4 2, and psi h for second state, that will be 2 divided by L sine 2 pi over L Q. Okay, got it? Okay. So similarly, Okay, sir. For n equal to 3, for n equal to 3, what will be value? E3 will be n square E1, that will be 9, okay, 9 E1 with सर इधर n क्यूब ना आएगा फिर? नहीं, n square. When we put the value of n, that is 3, then 3 square is equal to 9, okay. So this will be ठीक है सर. over L sine 3 pi over L over Q. So this will be the result, okay. So in this way we can find the any value of in this way we can say that सर इसका क्वेश्चन है ऐसे अगर कि आप हमें n की वैल्यूज देंगे और हमने पुट करके वो सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुख्तलिफ तरीके के आ सकते हैं। ये भी आ सकता है कि वाई ई नॉट इज नॉट अलाउड, ओके, so then you will solve all the action, all the you will solve the all exercise, complete exercise, and you will get the result, okay. So if the formula is given, then definitely you will find the value of E by putting the value of n, but I think the question is not will be so simple that only the formula is given and you will have to put only the value. Anyway, you may there may be a different type of question. Maybe the question is like that, okay, why what are the energies are forbidden, what are the states are forbidden, and why they are forbidden, okay, and what is the general formula of energy, okay, for the particle bound within the potential box, okay. So there may be a different type of the questions, okay. So similar, so at the end finally you will get, so finally
for, so finally En will be equal to, what is the n square? E1, okay, with LQ. Okay, with probability, you do, as you know that you may only find the probabilities. What will the probabilities of what will be the probability to find the state? Okay, सर यहाँ पे स्केयर नहीं आएगा? and scale where with sign? यस सर, जहाँ पर हम साइन के आगे जो n पाई ओवर l लिखा है, n स्केयर पाई नहीं आएगा? Are you sleeping? This is formula. Okay, here is n or n square. सर ये तो ठीक है, लेकिन सर अगर हम जब यानी कि n2 की वैल्यू फाइंड करें, आपने n स्केयर लिखा है, तो नहीं, सर n वो square नहीं लिखा, हमारे पास E2 E के लिए, एनर्जी के लिए, because energy formula is this n square pi square, and this is E1. You have find here. This is E1. Okay, and this, when we put this value of E1 here, you have find that this is equal to, this red circle is equal to E1. Okay, so this become E equal to n square E1. Okay, this is formula for energy. ओके सर, Okay, यस सर. so actually all things comes the formula, from formula. That must be any reason. Without justification, that the answer is nothing. Okay, अपनी तरफ से आप कुछ नहीं कर सकते. ओके सर. They have been derived. I am not saying from myself. Okay. 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 So from this we get this result. Okay. So what will be the probabilities? So this Hamiltonian eigenstates will be this. One is discrete, and energy is also a discrete. Okay. And if we find are interested to find the probabilities, then the probability of eigenstate of Hamiltonian, that will be the, as we have already discussed many and many times, that will be equal to the square, and that will be as there is a no as this is a real number, so it will not affect. Okay, taking complex conjugate will not affect, so will be not affected. So 2 over L, when sine square and pi over L, this will be the probability, okay, of Hamilton.
This will be the probability of Hamiltonian. Okay, Hamiltonian eigenstate. Okay. Okay, next. ये तो आपकी जी क्या कह रहे हैं आप? सर, एक मिनट, ये तो मुझे ये समझना है। probability क्या कह रहे हो आप? आपकी आवाज कट रही है। जी बोलें। सर ये स्क्वायर रूट 2/L आएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 ओवर x square root 2/L। x square root multiplied by x square root will be x square. Sorry, square root will be removed. So जी सर समझ आ गई। okay. So सर लास्ट पे फिर क्यू का स्क्वायर नहीं आएगा जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं? यार वो साइन उसका फंक्शन है यार, फंक्शन का काम ओके सर, ठीक है। ओके सर। ये तो सर ये थर्ड हमारा स्टेट सर जी ये तो हमारा स्टेट अगर हमारे पास अगर रियल होंगे तो अगर ये कॉम्प्लेक्स होंगे तो फिर स्क्वायर रूट का जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसमें आपको पता ही है, इसमें ये कोई पूछने वाली है। -1 का स्क्वायर रूट -1 का जो एयोटा का जो होता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। वो तो कई दफा किया होगा। एयोटा का ओके कॉम्प्लेक्स सर, कॉन्जुगेट क्या होता है यार? एयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? माइनस एयोटा नहीं होता? ये तो पहले कई दफा पढ़ा हुआ। एनीवे, सो दिस विल बी दिस अच्छा अब नो दी क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं जहां मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्टेशनरी पॉइंट जो होते हैं उसके क्या कहते हैं? मुझे आई डोंट रिमेंबर, वेव्स एंड मैकेनिक्स के कोर्स में क्या कहते हैं उसे? सर नोड्स ही कहते हैं शायद। नहीं, नोड्स आखिरी वाले पॉइंट को कहते हैं या जहां मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या होता है? आई डोंट नो मैम। व्हाट आर द स्टेशनरी, हम यही कहते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी points of Hamiltonian. Stationary point of Hamiltonian eigenstates for particle bound within potential. What will be the stationary points for Hamiltonian eigenstates for particle bound within the potential path? उसके क्या होंगी stationary point? How we may find the stationary point, I have already explained in the course of the classical mechanics. How you may find the stationary points? Stationary points क्या होती हैं? जहाँ कोई चेंज ना आ रही हो, ठीक है? तो वो कौन से पॉइंट्स होते हैं? Yes. When the first derivative will be 0. Okay. Stationary points are those points for which क्या होता है?
stationary stationary points are those points when there will no change in neighboring points. Is that first derivative is 0. Okay, so stationary point के लिए we know that the first derivative will be 0. Okay, so if q naught is stationary point, okay, the first derivative, the stationary point are those points when there will be a no change in the neighborhood point, is that the first derivative is 0. Okay, so it's mean we may find the stationary point. So if we take the psi, what is the psi h? Yes, psi h will be equal to, we know that that is equal to 2 over L sine n n pi over L q. That was the expression. Okay, this, okay, oh, sorry, not this. This was the expression. Okay, no, where is this expression? Yes, this was the expression. This was expression for Hamiltonian eigenstate. Okay, for the box bound in within the potential box. Okay, potential well. This is the expression. So I have write this is so. Oh no, sorry, there will be a square root. Okay. This is expression. Okay, how we will find the first derivative? First derivative with respect to change in position, because it is changing with respect to q. So one would take the derivative. If q naught is stationary point, okay, or q naught as stationary point, d phi h, the derivative with respect to dq, okay, that will be equal to at q equal to q naught. Okay, that is will be stationary point.
Okay, that will be, when we take the derivative, that will be a 2l square root, derivative of sine is cos, and derivative of this, that will be this term, the n pi q, that will become a n pi multiplied by l. Okay, derivative of sine will be a cos n over l pi q, and derivative of q with respect to q, that will be 1. So, and this for q at equal to q naught, the first derivative will be a 0 for stationary point. Okay, so this will be a 0. Okay, okay. Okay, sir. When you put it equal to 0, this mean this term is constant, this term is constant, only the variable term is the function is visible. So when we multiply constant with the constant, the result will be constant, and when it go to this side, that's become a 0. So it means your cos n l pi at q naught, that will be equal to 0. Okay, that will be the stationary point. Okay, and Excuse me, sir. yes जी, सर ऊपर वाले स्टेप की समझ नहीं आई, मैं दोबारा एक दफा बता रिपीट करवा दें। दोबारा बता जी सर समझ नहीं आई, दोबारा बता दें। अच्छा, ओके। ओके सर। Actually, we have to find the nodes. I don't know what is the node. मतलब actually we are interested to find the stationary point. Stationary point वो होते हैं जहाँ neighborhood में change जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। मीन ये मैक्सिमा या मिनिमा, जैसे जो हमने क्लासिकल में मैकेनिक्स के कोर्स में पढ़ा था, वेजनल मैकेनिक्स के कोर्स में भी पढ़ा है, और आप लोगों ने उसमें कैलकुलस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है तो देन किसी भी पॉइंट पे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है तो वो पॉइंट जो है स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं, यानी या वो मैक्सिमा होते हैं या मिनिमा पर, यानी उनके नेबरहुड में कोई चेंज नहीं आती। ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। जी सर ये समझ आ गया, ठीक है, अच्छा एक मिनट, अच्छा ये समझ आ गया। अब आपके पास क्या है, ये आपके पास गिवन था स्टेट फंक्शन, ठीक है, ये हमने निकाले इसकी वैल्यू, ये निकाल दी थी, ये समझ आ गई है। जी सर। जब हम इसका डेरिवेटिव, स्टेशनरी पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ क्यू वेरिएबल है, जब इसका क्यू के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव लें और उस किसी खास पॉइंट पे इसकी वैल्यू जब 0 होगी, ठीक है, 0 होगी, तो वो पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे जहां इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। अगर हम क्यू नॉट को स्टेशनरी पॉइंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है क्यू नॉट पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। यहां तक समझ आ गई? जी सर। अच्छा, इस स्टेट का हमने क्यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, दैट मस्ट बी अ क्यू नॉट को हमने स्टेशनरी पॉइंट डिफाइन किया, यानी जहां क्यू होगा उसके बाद डेरिवेटिव लेने के बाद क्यू नॉट पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 2/L एज इट आ जाएगा। जब हमने इसका साइन का डेरिवेटिव लिया तो कॉस आ जाएगा। इस कॉस के डोमेन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे n/L पाई, n/L पाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और q का डेरिवेटिव q के रेस्पेक्ट 1 है, तो आपके पास ये टर्म आ गई, ठीक है। ठीक, ओके ओके, हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो आपके पास ग्राफ कैसे बनेगा, ये मैक्सिमम क्या कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, गॉट इट बच्चों, आपने यहां तक था, ठीक है, समझ आ गई? यस सर आ गई है समझ। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। अब M3 के लिए आपको ड्रा कर लेना, ठीक है। उसके लिए उसके लिए आपकी वैल्यू बन जाएगी 0 1, M3 के लिए बन जाएगी ये M3 के लिए क्या था,
अब फोर के लिए बन जाएगी 0 1 2 3 4, यही ग्राफ 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जी सर, वो कर लेंगे हम खुद ही। ओके, जो निकाली थी याद है, क्यू ऐसे ही है ना, ये हमने वैल्यू फाइंड साइन स्टेट फंक्शन ऐसे ही है परवा, यस सर ऐसे ही है, ये हमने लेकिन find सर अपने साई एफ लिया, उधर हमने साई एच लिया था। है जो पहली स्टेट है, ठीक है। जैसे हमने कहा 2/L साइन पाई ओवर L क्यू आ जाएगा, और इसका मैक्सिमम तो हमने निकालना है, ठीक है, ये आ जाएगा। साई 2 लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/L साइन 2 पाई ओवर L क्यू आ जाएगा, ऐसे ही है ना। साई 0 क्या आएगा, जी कौन सर। ये कौन बताएगा, ये मैं फरवा से पूछता हूँ। साई 0 किसके बराबर आएगा, यस फरवा। जी सर। साई 0 किसके बराबर आएगा, सर 0 के। यस दैट इज राइट। बाकी सारों के साथ, क्योंकि जब साइज 0 करेंगे तो n 0 करेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, और 2/L जो है वो साइन 0 आ जाएगी, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये क्या करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मैंने पिछली दफा भी बताया था, ऐसे ही है मिनाहिल। मिनाहिल यही बताया था ना मिनाहिल। शाइस्ता, शाइस्ता, शाइस्ता है कोई, है यहाँ आवाज किसी की भी नहीं आ रही। जी सर, यही बताया था आपने। ठीक है, तो 0 जो है, किसका माइक नहीं चल रहा, मेरा तो माइक चल रहा है। अच्छा, किसका, मिनाहिल का माइक का मसला। नाहिल का नहीं था चल रहा। अच्छा, कोई मसला नहीं, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। तो ये जो 0 स्टेट है, ये इट विल नॉट एग्जिस्ट, इट विल नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा शान, क्या नाम है उसका, शान है, क्या नाम है मलिक का, चौधरी का। जी सर, मलिक जिशान। सर वैसे मलिक कब से चौधरी होने लग गए। यार मुझे इतना दांतों का नहीं पता होता, और ना मुझे इन चक्करों में ना फंसाया करो। पहले से मेरे से एक बंदा पहले नाराज हो गया था, क्या क्या है, ठीक है, याद है। नहीं सर, वैसे ये सोचने वाली नहीं करता, ठीक है। तो ये स्टेट नहीं एग्जिस्ट करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि पार्टिकल 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कोई पार्टिकल बॉक्स में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी तो नहीं कराई थी ना आप लोगों को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा कि वो क्या होता है। प्रोबेबिलिटी जो है वो दो साई एन का, क्योंकि साई एन है कैडबरा नोटेशन में, ठीक है, यानी इसका ये बताया तो नहीं था बेटा आप लोगों को। सर करवाई थी प्रोबेबिलिटी आपने। प्रोबेबिलिटी करा दी थी, जी सर। ये चलो फिर मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगी 2 क्या आया था, ये हमारे पास 2L ऐसे ही था ना, साइन जी सर। स्क्वायर N पाई ओवर L क्यू, ये आया था ना हमारे पास, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है, ऐसे ही। ये मेरा ख्याल है ये जी नहीं सर निकाली, ऐसे ही है। ये निकाली है हमने, फाइंड की है। जी सर निकाल ली थी हमने। अच्छा, तो इसका ग्राफ ड्रा किया था हमने, नो मेरा, सर, अच्छा N1, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ नहीं था। अच्छा N1 के लिए जैसे हमने पहले ड्रा किया था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसके लिए ग्राफ क्या आ जाएगा, ये तो पहले हमने निकाला भी हुआ है। N1 के लिए इस तरीके का बना था हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। हमने उसका ड्रा किया था साई का, ठीक है, साई 1 क्या आया था हमारे पास, साई 1 का हमने ग्राफ ड्रा किया था, वो क्या आया था, साई 1 के लिए ग्राफ क्या आया था,
याद होगा L/2 पे हाफ था ना साई 1 के लिए, याद होगा ये निकाला था हमने, मैक्सिमम पॉइंट भी निकाला यस था सर, L/2 पे था। L/2 पे था। ये आ गया हमारा L/2 पे मैक्सिमम था, ये था ऐसे ही है ना, हाफ से मैक्सिमम था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है, अब इसकी हमने जब प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी जो फाइंड की है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, जो पी साई 1 है वो स्केयर की फॉर्म में है। ठीक है, तो जाहिर है एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ये आपके पास इसका ग्राफ भी इसी तरह आएगा, साई 1 का तो उसी तरीके से आएगा, वो क्या आएगा आपके पास, लेकिन आप स्केयर है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका उसी हाफ पे मैक्सिमम, क्योंकि ज़ाहिर मैक्सिमम पॉइंट तो एक ही जगह पे है ना, ये किस पे, ये भी L/2। शेप तकरीबन एक जैसी है, सिर्फ एम्पलीट्यूड का है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। ओके सर। और साई 2 के लिए भी हमने निकाला था, जिसमें m की वैल्यू ना 2 पे, m की वैल्यू दो जगहों पे, साई 2 के लिए n मतलब 2 था हमारे पास, n अगर 2 था तो साई 2 आता है ना, साई 2 के लिए हमारे पास कैसा ग्राफ आया था, साई 2 के लिए हमारे पास आया था, ये कहाँ का मैक्सिमम पॉइंट था, याद होगा आपको, ये था दो जगहों पे, L/4 पे था L/4 पे, और दूसरा कौन था, दो, मैक्सिमम। और दूसरा किस पे था, 3, 2 पॉइंट थे ना, 2 का मतलब था m की 0 और 1 है, ऐसे ही है ना, तो ये थे, ये था ऐसे ही है ना, ऐसे ही था। ठीक है, नो सर। यही था, देखो जरा, साई 2 के लिए n2 था, तो आपके पास n की दो वैल्यू आती थी, 0 0 L/4 पे, और 1 पे 3 L/4, यही नहीं था। सर मिड में L/2 नहीं आएगी, और फिर उससे आगे हाँ 3/4 हाँ हाँ आएगी। हाँ हाँ जी, मिड पे L/2 है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम नहीं होगा, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मिड पे L/2 था, लेकिन यहाँ स्टेशनरी नहीं था। ठीक है ना, जी सर। ऐसे था ना, याद आया। जी सर। चलो इसको मैं और कलर में लूंगा। कौन को कह रहा था, नो अभी आ गया है, क्या नाम, कौन फरवा थी, कौन थी, मैं मुझे नहीं याद, किसने देखा यस था, सर। फरवा देख लिया आप, था ना ऐसे ही, यस सर, देख लिया। यही था ना, और उसका जी सर, यही था। और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का था, थेरेपी इस तरह करके, याद आया, इस पे मैक्सिमम था और इस पे मैक्सिमम, ऐसे ही है ना। यस सर, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा अब पी साई में आपका नेगेटिव, जाहिर है प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव पार्ट मूव हो जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसी तरह, इसकी यही चीज रहेगी, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, उसी तरह ही ग्राफ उसी तरह ही रहेगा, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, अब ये L/2 है। ठीक है, बाकी पॉइंट उसी तरह ही है। ठीक है, ये वही पॉइंट है, उसी तरह ही सारा कुछ, लेकिन अब ये प्रोबेबिलिटी, ये तो प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा खैर, क्योंकि स्केयर है। ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी बराबर होना चाहिए, ये आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट, ओके गॉट इट। सर एक दफा रिपीट करवा दें दोबारा। नेगेटिव साइड जो है ना वो भी पॉजिटिव बन जाएगी ना, प्रोबेबिलिटी है ना, नेगेटिव हिस्सा खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में, वेव में दोनों आ रहे हैं। ओके सर। ठीक है, ये बाकी पॉइंट उसी तरह ही है, यानी ये मैक्सिमम उन्हीं पॉइंट पे है, L/4 पे। ठीक है, और 0 जो है वो L/2 पे है। ठीक है, और फिर मैक्सिमम 3 L/4 पे है। ठीक है,
लेकिन वो साइन की वैल्यू अब आ रही है ना, वो मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। साइन स्केयर है ना, देखो साइन माइनस, वैसे साइन +1 टू -1 तक जाता है, जब स्केयर लोगे तो -1 का स्केयर भी +1 होता है ना, तो माइनस टर्म माइनस कर खत्म हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगा ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली इफ यू कंसिडर phi 3, ये भी मैंने आपको कराया था उसमें, एंड व्हाट विल बी, इट विल बी इक्वल टू, यस, now it was, yes, do you remember what values was? Yes, this point was L by 2. Oh, sorry, at that time that was, that was 3 point, क्या क्या आया था मुझे अब याद नहीं आ रहा। L/6 sir, L/6 आया था और 5 L/6. 3 आए थे ना वैल्यू, क्या क्या आए थे? L/6 और Yes, sir. और क्या था? L/2 और 5 L/6। अच्छा, L/2 और and 5 L/6। 5 L/2 होगा फिर, नहीं सर, L/6, 5L/6 है। L/6, जी सर, 5 L/2 था या 6 था? L/6 था सर। सर ये मिड वाला है 3/6 आया, L/2 हो गया, और ये 5/6 लास्ट वाला। ठहरो, ओके एक मिनट, एंड 3 पाई मैक्सिमम पॉइंट हमने निकाला था, हाँ 5/6L, ठीक है, ऐसे ही है ना? यस, ये था, ठीक है, ठीक है, ये था ना, ठीक जी था। सर। एंड ग्राफ कैसे बनेगा? ये वो पॉइंट है जो जहां मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं कम होगा, यहाँ मैक्सिमम जाएगा, मीन यू मे से दैट इट इज लुकिंग लाइक, पता नहीं उसमें इन पॉइंट पे मैक्सिमम है। आई डोंट नो पिछली दफा मैंने सही बनाया ग्राफ या नहीं, उसको देख लेना, मेरे पास अब लेक्चर नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं। L/6 था ना, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है, and as I have already explained, the probability will be equal to what is the probability, and probability will be presenting the same graph, okay, and now the
ओके, गॉट इट? ठीक है, ओके. Yes, sir. So as we increase the number, okay, as we increase the number, probability will be increased. Okay, this the wavelength will be decreasing. Okay. As n will be, as n will be increasing, the wavelength will be decreased. Decreased. And probability of finding particle will increase. Okay. What is the meaning of that? As n is greater and greater and greater, the numbers of ripples will be increased. Okay. For example, if n is very greater than, very large, okay, then the graph will become like it will be increased. Okay. Just 1 minute. Okay. As n will be increased, these numbers will be increased. Okay, increasing the number of n. Okay. So if n tend to infinity, okay, if n tend to infinity, then what will be happen? Close to infinity, then these will be so close. Okay, these ripples will become to increase, then these ripples become so number of ripples will be, if n tend to infinity, number of ripples will be also tend to infinity, and this will become a constant line. You may say that so this become a continuous area. Okay. So this become a continuous. Okay. So this ripple color, I think, not that. Okay. So this become a constant. Okay. So as in the case of classical mechanics, so if we increase if the energy become infinity, as n increase, the energy will be increased. We know that energy, what is the energy value? Yes, energy value is En is equal to n square
E1. Okay, as n into infinity, energy will be also become infinity. As n increase, as n increase, as n increase, energy will also increase. Okay. Also increase. Okay. So as n tend to approach to infinity, the energy will be also. So for higher level energy, that will be for high energy electron will be treated as the classical. High energy particles in quantum mechanics will be treated as classical particles. Okay. So as high energy level, so high energy particle bound in potential box will be more close to classical. Particle. Okay. So if n tend to approach, then that will be become a constant. Okay, as in the classical case. Yes, done. The next exercise related potential box. क्या कह रही हो? ऊंचा बोलो बेटा, आवाज नहीं आई आपकी। मैंने जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा, as n will be increased, as n will be increased, the energy will be also increased because En is equal to n square E1. Yes, we have proved in the इंफिनिटी की तो वो बहुत ज्यादा लाइन क्लोज है एक दूसरे के, उसके ऊपर आपने एक ग्राफ करवाया तो n जो है वो ज्यादा है, यानी n की वैल्यू ज्यादा, तो वो आपने ऊपर करवाया तो उसमें रिपल्स ज्यादा होंगे या एम्पलीट्यूड कम होगा? नहीं, एम्पलीट्यूड तो उतना ही रहेगा ना। एम्पलीट्यूड रिपल ज्यादा बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा। जैसे n1 था तो एक रिपल था, ठीक है, n हाँ बढ़ते जाएंगे। और जब आपके पास n इंफिनिटी हो जाएगा तो रिपल्स इतने क्लोज आ जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कंटिन्यूस। ओके, रिपल ही नहीं रहेंगे। देखो चीज बहुत छोटी 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 होती जाएगी तो रिपल गायब हो जाएंगे ना। जी सर, थैंक यू। ये ठीक है, गॉट इट? क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू। ओके, okay. So when we take the integration of cos, okay, when we take the integration of cos, the integration of cos will be a sine, and that will be the divided with the derivative of this, and the integration of this will be equal to this. Okay, limit is from 0 to L, limit is from 0 to L. By putting these values, yes, yes, what will be value? So by putting the value of L and 0, sine 0 is 0. Okay, that's why the result will be minus 1 over L. That become because sine 0 is 0, so result will be equal to sine m plus n. If we put the value of q as equal to L, then L will be cancelled with the L. Okay, this m plus n pi by 2 minus
L will be cancelled with this L. Okay, this L. This L will be cancelled with this L. Okay. Oh, sorry. Sine m minus n. मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। Pi, this L will be also cancelled with this L. Okay, and m minus n pi over. Okay, so this L will be cancelled with this L. Okay, that will be 1. Okay, so as n and m is integers, is a number. Okay, is integer. So m plus n will be integer. Okay, and m minus n will not equal to 0 if m is not equal to n. Okay, this implies that sine m plus n pi will equal to 0, and similarly sine m minus n pi both will be 0. Similarly sine 0 will be equal to 0. Okay, that will, these are due to these relationship. When we put this value in above equation, due to these result, psi m and n will be psi n and psi n will be equal to 0 for n is not equal to n. Okay, so we got it. Okay, if we take the dot product of n, सर ये n और m अगर इक्वल होंगे तब 0 नहीं होंगे सर? नहीं, y वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. Not equal to 0. Yes, your question is good. M and n will be not 0, not equal to 0 for n equal to y, because एक्सक्यूज मी सर। yes, सर कुछ स्टूडेंट्स की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, उन्हें लिंक सेंड कर दें। अच्छा, लिंक वैसे वो वही होता है, चलो मैं फिर भी कर देता हूँ। सर वो नहीं हो रहा, कह रहे शो नहीं हो रहा, ग्रुप में सेंड कर दें। मैं कर देती हूँ। ओके ओके, if n is not equal to m0, then n, if n equal to m, then that will be not equal to 0. No, question is why. Yes,
because in second term, okay, why this is written like this? Why? Because you one minute, please. If m and n same, then it will become a 0 by 0 form. Yes, m minus m, there will be a 0 at denominator and numerator. There will m minus n will be 0 and m minus n will be a 0. 0 divided by 0. Okay, this become a 0 by 0 form. Yes. Okay. Okay, students. जी सर। So जी सर ठीक है। so this सर टाइम भी हो गया। this okay, 1 minute. Okay, so this formula will be not applicable. Okay, so that's why because second term, because in second term sine n minus m pi by l q n minus m pi over l over q will become a 0 divided by 0, undefined. Okay, undefined. Yes. So sin n and psi n, and you take the sin n 0 to l, that will become a sine square n pi, that will be equal to sine square, because that formula sine, when we put the n, that will be a, okay, sorry, that is wrong, that will be equal to 1 by l 0 to l. Yes, sine, yes, that will be equal to sine n pi over l q dq. Okay, and we have solved this integral already. Yes, do you remember the value? What is the value of this integral? Sine square. Yes, sorry, क्या थी? If you remember, that is cos 2n pi over l q, okay, divided by 2. Yes, and that I have solved, that is equal to, already solved, that is equal to 1 over l, okay, sorry, there was a 2, okay, so sorry, that was
Okay, so this was equal to this was 2. Okay, and but what is the result of this integration was I have already solved. What was the result of this integration? I have yesterday lecture I have solved. This is equal to L by 2. सर जीरो Yes, L by 2 last lecture. Okay, and this will be L by 2. So 2 will be cancelled with the 2, L will be cancelled with the L, that will be equal to 1. So if that will be same, so psi n, if n and m are same, then that will be equal to 1. Okay, so if I say this is equation x, okay, I say that this is equation x, and सर टाइम हो गया है सिर्फ मैं ये आंसर बताने लगा हूँ, ठीक है, and if I say that this is equation y, okay, if I say that this is equation y and that is x, so by comparing the x and y, सर जो आपने अनडिफाइंड वाला किया सर उसके नीचे तो क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ, एक मिनट, मैं सिर्फ ये पूरा कर x and y will be implies that क्या हो जाएगा, psi n and psi n, their dot product will be equal to n m. If nm is the same, then that will be 1. If nm is different, okay, what is the meaning? That will be 1 for n equal to for n equal to n n. The dot delta function mean, okay, 0 for n is not equal to, okay. So from x and y we have got this result, okay. This so that they are orthogonal or they are independent, okay, basis, okay. So this is our requirement, okay. Now the okay, okay. इनका क्यूब है सर जो नीचे यार नीचे ये सर क्यू डेरिवेटिव में नहीं, आएगा सर वो दोनों क्यू का फंक्शन, दोनों इस साइन के फंक्शन है, ठीक है, ये दोनों जो है ना ये साइन के ठीक है फंक्शन, साइन का वो है, आर्गुमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल है, n माइनस एम पाई डिवाइडेड बाई एल क्यू, ये दोनों इसके आर्गुमेंट है, मतलब इसका एंगल है n माइनस एम पाई बाई एल क्यू, ये इकट्ठा है n में से m, इफ n और m इज इक्वल देन this become a zero. When we multiply zero with any number, any q, anything, that answer will be a zero. So the in numerator there will be a zero and denominator there will be a zero. So that will be undefined. Okay, zero divided by zero is सर नोमिनेटर में सर जो नोमिनेटर में है ना सर नोमिनेटर जी सर इसके साथ जो क्यू लिखा सर ये नहीं आएगा ना आएगा, क्यों नहीं आएगा, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, यू आर राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, देयर वाज नॉट क्यू, यस यू आर राइट, सॉरी, यस yes, I must remove this, you are right, okay, thanks for correction. सर मुझे कंफ्यूजन हो रही थी इस वजह से पूछ रहा नहीं, थैंक यू, थैंक्स, ठीक है, ये मैं ठीक कर रहा हूँ. Yes, you are right. यार एक तो ये बड़ा रोल है. This q will be not, this q not mentioned here. Okay, there's no q. Yes. Okay, and the complete solution is I think now it is clear. Okay, वो चला गया.
किधर चला गया है? तो आप तेज तेज करता हूँ, मेरा ख्याल है। एक दफा मेरा दिल था कि आप सबको दिखाएं, ताकि किसी ने स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो। ठीक है, यस, ओके। सर ये हाँ जी जी सर, ये ना व्हाइट बोर्ड पे सर जो आपने जो एक्सरसाइज किया था, ये ना ग्रुप में भी शेयर कर दे सर। अच्छा ठीक है, वैसे तो मैं ये स्लेट पे रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये तस्वीर मैं कोशिश करता हूँ लेने की ना, तो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वैसे ही रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा, ठीक है आपको। मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। या किसी ने स्क्रीनशॉट ले ले कोई, मैं इसका ना ऐसे करता हूँ, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे पता नहीं इतना कि वो इतनी इजी हो सकता है या नहीं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ले सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। सर 2 दफा में ले सकते हैं, ऐसे बहुत छोटा हो जाएगा। अच्छा थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है, रजी की भी बात जी, मान ले। इक्वेशन y तक कर देना, फिर उससे नीचे कर देना। ठीक है सर ऊपर क्वेश्चन भी सर। मैं कर देता हूँ बेटा, मैं रजी भी ठीक है। अब ठीक है, जी यहाँ तक ले लो, पढ़ा जाएगा ना? जी जी सर, बस यहीं पे स्टेबल रखें सर एक जगह। स्टेबल रखनी है, ठीक है। जी सर। ओके, अब जी आगे सर, कर। एक हो गया। जी सर। ओके, दूसरा ले लो, ठीक थोड़ा सा नीचे करिए सर, ज्यादा ऊपर हो गया। है। अब ठीक है, जी सर। जी सर, अब बाकी कर दें। अच्छा ये लो बाकी, यही था ना बाकी, यस, थोड़ा और नीचे कर, जी सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। जी सो सर। ये हो गया। अब मैं रजी को वो शाम देख लें, ये पास